सफर और ये बहुत बड़ी खासियत है पूरी दुनिया के मुल्कों में हमारा सम्मान देश का इसलिए कि गांधी का दिन थे, ये लोकतंत्र मजबूत थे, इसलिए हमारा मान सम्मान पूरे देश का अंदर होता है। इसलिए मेरा मानना है कि राजनीति में आने के बाद में नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलनी चाहिए। हम राजनीति में किसी नाम आने वाली जनरेशन क्या कहेंगे इसके लिए आपका कैमरा அப்படி திருப்ப முடியாது अन्याय हो, अत्याचार हो, उत्पीड़न हो, उनके साथ नहीं देखिए, उनकी सिफारिश नहीं करेंगे। वो कितने नजदीक का आदमी है, परिवार का आदमी है, तब भी उनको चाहिए मजबूती के साथ वो न्याय सुनिश्चित करने के लिए काम करें। ये हमारा जीवन कंफर्ट की जो है वो बनी रहेगी, तभी जाके हम लोग गुड गवर्नेंस नहीं करते हैं। मैंने पहले कहा कि कोई हमारी दुश्मनी किसी से नहीं थी, यही कहा। पहले जमाना में सुनते थे असेंबली के अंदर या पकड़ों के अंदर इतनी गर्मागर्म बहस होती थी, आरोप लगते थे, यदि बात पहले चौकी करता और वही लोग सिंपल के लोग से मोहब्बत से भाईचारे से हंसी करते थे। ये टेंडेंसी जो थी आज इसके लौटाने की आवश्यकता है। आज धीरे धीरे दुश्मनियों बदलती जा रही है, तनाव दिखता है पक्ष विपक्ष के अंदर, उसको समाज होती है केंद्र में हो जाए। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है इस भूमिका निभाने के लिए वो पहल करे, विपक्ष पहल नहीं करेगा, पहल करनी पड़ेगी जो शासन के अंदर उनको पहल करनी पड़ेगी। और आज आवश्यकता है केंद्र में भी और राज्यों के अंदर। अगर आपने इतना बड़ा सम्मेलन किया, मैं तमाम आयोजकों को जो हमारे स्पीकर सबने मिलकर जो किया है बहुत बड़ी पहल करी है और ये बहुत सफल हो रहा है। तो पहला सम्मेलन है, धीरे धीरे आने वाले बहुत ज्यादा मजबूती के साथ ये काम होगा। मेरा मानना है कि आज जो हमें मुख्य रखना है विषय के आधार पर हम लोग चलेंगे तो आने वाले वक्त हो सकता है कि नए माहौल के साथ में देश में नई दिशा देने में काम पाएंगे। मेरा मानना है कि लाइव यूपी गवर्नमेंट आगे की कानून बना के अधिकार दिए जनता को। अब तो नई पहल करने का आपने विचार व्यक्त किया है। आज हमने प्रयास किया राजस्थान में राइट टू हेल्थ, पूरे देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य है जिसने राइट टू हेल्थ एक्ट बनाया है। 25 लाख हम लोगों ने इंश्योरेंस दिया है, सारे इलाज फ्री है, प्राइवेट के अंदर ही और पब्लिक के अंदर भी। बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका हुआ राजस्थान के अंदर। ऐसे अपने कई नवाचार किए राजस्थान के अंदर। इंदिरा गांधी के नाम से हमने शहरों में रोजगार नरेगा शुरू किया है, जैसे नरेगा है गाँव के अंदर, ये शुरू किया गया है। मेरा प्रधानमंत्री को मैंने पत्र लिखे हैं और मैंने रिक्वेस्ट करी है आप राइट टू सोच वक्त आ गया कि पूरे देश के लोगों को जैसे विदेशों के अंदर जो नीडी है उनको बिजली पगार मिलता है, फोर्टनाइटली मिलता है, उसी ढंग के हमारे मुल्क के अंदर भी आज मजदूर काम करता है 55 साल 60 साल उसकी बॉडी है, वो काम नहीं कर सकती है मजदूरी के लिए। ठेले वाला है, गरीब आदमी है, तो कम से कम जिंदगी में सोशल सिक्योरिटी मिले पक्की, जिससे कि वो आराम से अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। कई बार बुजुर्ग आदमी के
क्योंकि बेटे होते हैं पोते हैं तो वो इस लायक नहीं होते हैं चला सकते हैं। तो धीरे धीरे तमाम देश के अंदर सोशल सिक्योरिटी लागू होनी चाहिए। ये थीम भारत सरकार को मैं समझता हूँ कंसिडर करना चाहिए। और आप जो सब यहाँ हमारे सीनियर लीडर्स बैठे हुए हैं, अगर वो सब मिलकर के विचार करेंगे तो मैं समझता हूँ कि सोशल सिक्योरिटी और एक हेल्थ के राइट जो है, ये ऐसा वक्त आ गया है जब हम पूरे दुनिया के अंदर विश्व गुरु बनने की बात भी करने लगते हैं। तब बन पाएंगे तो हमारे खुद का जो है घर, हमारा देश है, उसे गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का और निडी लोगों का, निडी किसी जाति किसी धर्म का हो, उनका हम भला कैसे कर सकते हैं, उनको न्याय कैसे दिला सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं न्याय उनके साथ में, और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी बहुत आवश्यक हो गई है। मेरा मानना है राजस्थान में एक और बुजुर्ग लोग एक नाम उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हम सरकार ये मेरा मानना है कि सभी को बुलाया, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मेरी शुभकामनाएं हैं। और बड़ी संख्या में विधायक आए हैं, सब लोग विधान परिषद से आए हैं। मैं सबको मेरी शुभकामनाएं, मेरी बात करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। Thank you very much, sir. Thank you very much for taking time out for all the honorable MLAs and MLCs from all across the Bharat. बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके बिजी शेड्यूल से समय निकाला और फर्स्ट नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। थैंक यू वेरी मच। My friends, this is the beauty of this session where we listen to the views and experiences of such tall personalities. And now we have with us one more such tall personalities in online mode. We have with us Shri Prithviraj Chavanji, who is a seasoned politician who has made a significant contribution to Indian politics, serving as the Chief Minister of Maharashtra from the year 2010 to 2014. Chavanji has showcased a leadership skill and policy expertise. With the strong focus on development and governance, he has played a crucial role in shaping the political landscape of Maharashtra and beyond. I'm really happy to share with you that Prithviraj Chavanji has been associated with Sri Rahul Karasar for more than a decade now, and he was instrumental and I would say a prime force and motivation while the MIT School of Government was being founded. We are really honored to have him here today. He wanted to come physically in person, but unfortunately because of some unforeseen meetings and circumstances, he couldn't make it. But it's good that it's our good fortune that he's here with us online. So if he could hear us, I would like to welcome him with a big round of applause. I would like to request everyone in the audience to please welcome him with a round of applause. Thank you. Sir, can you hear us? I think we are not able to hear him. Technical team, can you please? Can you hear me now? Yes, sir. Thank you so much, sir. Over to you. No. Thank you. I'm sorry that I could not join you in person. Let me first congratulate the organizers, the MIT group, for conceiving this gigantic event for the first time in the country, where so many legislators from across the country, from across the party lines, have assembled together to strengthen the future of India's democracy. I've been involved in planning this event with Rahul for some time. Rahul was kind enough to invite me for a couple of meetings, and I had given some of my ideas. This was, of course, I couldn't be here today because I had to be away from Mumbai for a party meeting. As the legislators from across the country are joined here today in a massive gathering for the first time ever in our country, perhaps I don't think anywhere else in the developing world such a gathering has ever been put together.
think I must compliment organizers, Mr. Vishwanath Karaj, Rahul Karaj, and the entire committee, and others, senior leaders in the country, the former speakers in the Lok Sabha, who have been kind enough to grace the occasion. The challenges before all of you is how we develop India into a developed country in the near future. The dream that our Prime Minister has for India to make India a developed country by 2047, when we celebrate 100 years of our independence. There are challenges. Saying that we'll become a developed country is one thing, but trying to develop the country, go into a trajectory of fast economic growth, and also serve the cause of equity is not very easy. Of course, we all would like India to become prosperous, wealthy, and remove the endemic poverty, the lack of education, the ill health and all that as soon as possible. But the bigger challenge I think before us today is how India remains a liberal democracy, a democratic republic that our founding fathers conceived us. As we develop, there are challenges, and challenges could be there. Different states could pull in different directions. But the idea of India that was conceived by the founding fathers when we founded the Republic, when we wrote our constitution, that India should not be allowed to slip out of our hands. The liberal democracy that we conceive, a secular democracy that we conceive, must strengthen, because that alone will ensure that India becomes a prosperous country, a developed country in the near future. If you lose that dream, if you lose that ideal, then I think mere economic growth rate without equity, without justice, without brotherhood, and without true liberty will be meaningless. We have in the past slipped a little as far as our freedoms are concerned, whether it's the media freedom, whether it's democratic index. And I think some people argue that it's bound to happen as we develop, but I don't agree. I think we must, while we develop, we must preserve our democratic republic, our secular democracy, freewheeling democracy with its problems and all. But we cannot, in order to achieve faster development, give up this ideal of a democratic republic. There are countries, there are examples in the world where a more authoritarian regimes have developed faster. And we are given examples of East Asian countries, we are given examples of China, some other countries. But I would never sacrifice the idea of India that was conceived when our republic was founded. But the dream of being a developed country in a short time is something to be cherished, and I definitely cherish it. You have before you a large agenda. One of the immediate challenges which legislators face today is what to do with the anti-defection law. The anti-defection law, as it was conceived in 1985 by late Rajiv Gandhi, with the particular events happening around us, that served us to some extent. It had faults, and there was a major overhaul of the anti-defection law in 2003. And we have today the law as it stands, which was amended in 2003. Apparently that law has not worked. We have seen examples in many state legislatures where there have been rampant defection, governments have been brought down, new governments have been created. I urge you to really introspect and discuss whether there is a need, and as I believe, there is a need to scrap the current version of the anti-defection law and enact something more, which will really not allow defection to happen. There are many suggestions still in here. And this is one thing which I think I strongly urge that you discuss in the next deliberations or next days. Another thing I would really ask you to ponder is the Constitution framers considered separation of powers between the three
arms of the government, the legislature, the judiciary, and the executive. But we don't seem to be anywhere near that ideal. I think the parliament movement and parliament virtually commits a hierarchy. Parliament cannot legislate itself. Parliament has no role in budget making at all. Parliament cannot disagree with the ruling party whip. They have a different view. Or if the electors who are elected and have a different view cannot do it, they become really slaves. This is exactly what was talked of by late Madhu Limaye when the original anti-defection law was being enacted. And he said, please don't do it. The legislatures across the world, very few of them have a law like ours. United States doesn't have it. England doesn't have it. I think we need to really recorrect the separation of powers and empower the legislature a little more. And one thing to do that would be to eliminate the anti-defection law entirely, so legislatures can act on their own in all matters. In the United States, we know that even the appointment of Supreme Court justices is at the behest of the Congress. The budget is framed by the Congress. The new laws are framed by the Congress, and the President is just given de facto budget or de facto legislation to work on. I mean, we may not be able to go to that extent today, but I think I will strongly urge you to consider whether in today's scenario, legislatures have any role as was conceived when American Constitution was being drafted. The principle of separation of powers between the three wings of the government. I think it's not working here today. The executive has become all too powerful. I mean, even the judiciary has limited role, but because appointments ultimately have to be vetted. But particularly how the legislature gets back the power, its teeth, so that what was conceived in the Constitution when it was framed, the three arms of the government should balance each other, there should be checks and balances. It is not happening today. The executive is all too powerful, whether in states or at the central level. These two themes, which are partly interrelated, should be, I think, would be my priority. Of course, how do you make sure that the legislators are given enough secretarial assistance, how they can really work on research. There are issues about constituency development. I mean, the organizers have conceived many verticals where you can discuss and enrich yourself. Of course, the most important thing today will be meeting across your colleagues and friends from all over the country. Many of you probably have not been to Mumbai. Enjoy Mumbai. I'm sorry I'm not there personally to welcome you, but I think one of my earnest requests before I conclude is that this should become an annual event. Maybe some other state would take up the sponsorship of the event next year, with of course the secretarial assistance provided by the MIT group. But let us make this into an annual event and let us carry on memories of your visit, your conference, and let's get something tangible out of it. Thank you. I wish the delegation all the best. Thank you again. बहुत बहुत धन्यवाद आपका पृथ्वीराज चौहान जी। आपने तमाम व्यस्तताओं के बावजूद समय निकाला और ऑनलाइन जुड़े। हम जानते हैं कि आप यहाँ पे आना चाहते थे लेकिन आप नहीं आ पाए। बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का। और इस पूरे सत्र की सबसे बड़ी सुंदरता ये है कि हमारे तमाम ऐसे वरिष्ठ नेता जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है, उनके जीवन से हम कुछ सीखे, समझे, उनके तजुर्बे, उनके अनुभव को यहाँ साझा कर रहे हैं। और अब मैं आगे बुलाना चाहूँगी एक ऐसे नेता को जिसको हम सब बहुत सुनना चाहते हैं, हमारे स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर लोब्सांग सांगे, फॉर्मर प्रेसिडेंट सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन, फर्स्ट सेक्योंग ऑफ द सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रधानमंत्री रहे हैं। और लोब्सांग सांगे के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो बहुत ही एक प्रोमिनेंट शख्सियत रहे हैं टिबेटन कम्युनिटी में। लोब्सांग सांगे has been a very prominent figure in the Tibetan community. He is an accomplished scholar, he is an activist and politician. And as the president of the Central Tibetan Administration, he has played a pivotal role in advocating for the rights and freedom of the Tibetans. With a remarkable background and dedication to the cause, Sangye's journey is one that inspires and captivates
making him an influential voice in the global arena. डॉक्टर लोग सांगे हम सुनना चाहेंगे आपके अनुभव, आपके तजुर्बे और आपका पूरा राजनीतिक सफर। स्वागत है आपका। Thank you. Honorable Venkata Naidu ji, Sumitra Mahajan ji, Honorable Meera Kumar ji, Shivraj Patil ji, Honorable Speakers, Honorable MLAs and MLCs from all over India. Yesterday I was a chief guest in a panel and many of the MLAs and MLCs were complaining that we must have a session of at least 45 days or 60 days so that MLAs and MLCs will participate and make executive accountable. By today's morning presence, yesterday was Friday night, today is Saturday morning, your presence, your attendance shows that even if you're given 90 days or 120 days session here, you will have full attendance. I hope the speakers will notice and local assembly will have 60 to 90 day sessions a year. I am a Tibetan, presently I am a senior fellow and lecturer at Harvard Law School, but as introduced, I am a Tibetan and I have worked with His Holiness the Dalai Lama for 10 years as the Prime Minister of Government Exile. As you know, His Holiness Dalai Lama says he is a son of India because he spent most of his life in India. But as a Tibetan, we also say I'm from a land of Shiv Bhagwan and Mansarovar too. So we are refugee here, but I think Shiv Bhagwan and Mansarovar is in Tibet. So on behalf of all the Tibetans, I want to extend my greeting and also would like to congratulate Rahul Karat and Vishwanath Karatji for hosting this event, an unprecedented, historic event where when we met a year ago, I never thought that such a gathering would be possible. But this is a very, very successful event and I want to congratulate MIT, all the staff members and volunteers for making this event a grand success. Also, Vishwanath ji as a teacher, he is always testing me. This morning I found out that my name is among the speakers. But I hope I'll pass the test this morning. The agenda or issues yesterday Honorable Meera Kumar ji mentioned, which is also listed in the program, are casteism, criminalization, criminalism, corruption, colonial mindset and climate change. 6 things को कैसे challenge करें? How do we confront this? To challenge this, confront the 6 C's, I would propose 3 K's. Karma, Karuna and Karam. If you think this is your karma, to be MLAs, MLCs, if you have Karuna in your heart, आपका कर्म, आपका कर्तव्य, आपका काम क्या होगा जनता का सेवा. Because the priorities are wrong. Why we have all these problems? Number one, people elect you, but once elected, people started thinking about individual, my own interests, or my faction's interest, group interest, party's interest. Nation interests come later, and people's interests come last. If you think, if you have karuna in your heart, if you have compassion in your heart, first you will think of people who elected you. Then you will think of nation. Then only think of your party. Then think of your group. Then your individual interests. So, to be a leader, you all must think it's your good karma. I was in the session yesterday, some MLAs and MLCs were complaining, हम तो छोटा MLA है, हम मिनिस्टर नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, हम तो opposition में है. I have been to 30 so countries. I have met member of parliament from Australia, Sweden, Norway, America, Canada. सब नहीं कहते हैं. I'm just a member of parliament. हम मंत्री नहीं हैं. When you go to and then you put, it's I'm not in the ruling party. I'm the opposition. But when you go to the ruling party and people say, no, I'm not in the Foreign Relations Committee. When you meet the MP of the Foreign Relations Committee, he will say, I'm not an MP, I'm not a chairman of the committee. When you go to meet the chairman, I say, I'm not a foreign minister. When you go to meet the foreign minister, they will say, I'm not the prime minister or president. Everybody thinks I'm lower. You want your faces
there. Then you are. Very good. Sir. Actually, आप लोग MLA, MLC है, आप लोग तो लाखों में से एक है. लाखों people elect you. आपका कर्मा है. This is very fortunate. आपको भारत में हम लोग कहते हैं we have 3 करोड़ भगवान. MLA, MLC तो सिर्फ 4,000 है. आप तो भगवान से भी गिनती है. तो हमें सोच बदलना चाहिए, क्योंकि गांधी जी ने कहा है आप जो सोचते हैं वो कहेंगे, वो करेंगे करेंगे, ये आपका हैबिट हो जाएंगे, कैरेक्टर हो जाएंगे, वो डेस्टिनी हो जाएंगे. जो सोचते हैं आप बन जाते हैं. आप सोचते हैं हमें मेरे कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं होगी. हम सोचते हैं कि मेरे है, भगवान से भी मैं कम हूँ, ये तो मेरा करिश्मा है, लाखों में से एक हूँ. तो सोचने से आपका कहने भी होगा, करने भी वही होता है. ये कॉलोनियल माइंडसेट है कि नहीं. सबसे ताकतवर देश, most powerful country in the world is America. Vice President of America is an Indian woman. Still we talk about colonial mindset. हमें कब्जा किया, ये क्या, वो ताकतवर है. हमारे लोग Fortune 500 कंपनीज का कितने सीईओ, कितने प्रेसिडेंट कौन है? इंडियन है. यहाँ पे कहते हैं हम लोग कुछ नहीं है, colonial mindset है. तो आप कर्मा है, करुणा होना चाहिए और आपका काम वो करते हुए निकल जाएगा. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कास्टिज्म बहुत प्रॉब्लम है. कल विश्वनाथ कारंत जी कहा साइंटिफिकली इज प्रूवन. हमारा ब्लड टेस्ट कर चुका है. ऑल आवर ब्लड बी टेस्टेड. 99.9% ऑफ आवर ब्लड इज एग्जैक्टली सेम. अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, एशियन हो, जो भी हो, ब्लड 99.9% ऑफ ऑल आवर ब्लड सेम. हमारा ब्रेन सेम है, हमारा ऑर्गन सेम है. वेयर इज द डिफरेंस? और करप्शन की बात है. Because you think of your interest first, your family's interest first, then your group interest first, और पार्टी का इंटरेस्ट, क्योंकि इलेक्शन जीतना है उसमें पैसा चाहिए. That's how it comes. और आपके दिल में करुणा है, सोचते कि जनता के लिए सेवा करने के लिए इलेक्ट हुआ है, तो जनता will be first, country will be second. So if you change your mindset, you are very powerful people. You can change the nation. Now, colonial climate change is a problem for the whole world. By 2030, in 7 years' time, food, energy and water will be less than what is being produced now, what is being available now. 2030 is the turning point. पानी कम, खाना कम, एनर्जी कम, सारे देश में. अभी next year, more people in the world, half the countries in the world, will have lack of drinking fresh water. Half the countries in the world, अगले साल से कम होने वाला. अभी there are so many villages around the world where they don't have drinking water on a daily basis. So climate change is real. We are confronted with that. So unless we all come together, unite, and fight this climate change, we are not going to make changes in the whole world. I would like to conclude by saying, because the morale of the elected members are so low, ये सिर्फ इंडिया नहीं है. If you look at the polls in America, the poll of American Congress is around 30% जनता का विश्वास नहीं है. यूरोप में भी विश्वास नहीं है. Almost all the countries, maybe bearing some exceptions, most of the parliaments have the trust and the confidence of the people for less than 50%. इसलिए in the whole world, since 2020, since the year 2000, more countries are becoming non-democratic. If you have studied the Freedom House Index, more countries are becoming non-democratic, more autocratic. तो सोचने लगता है डेमोक्रेसी इज नॉट वर्किंग. ये लोग बात ही करते हैं, कुछ काम ही नहीं करते. सो लेट्स गो फॉर पॉपुलिज्म, लेट्स गो फॉर ऑथोरिटेरियनिज्म. इसलिए ऑथोरिटेरियन लीडर्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर. तो सोचते हैं स्ट्रॉन्ग मैन आ जाए तो सब प्रॉब्लम खत्म कर देंगे. नहीं,
यूक्रेन का वॉर इसलिए हुआ, पहले अथॉरिटेरियन आया और इन्वेड कर दिया, ग्लोबल डिजास्टर हो गया. सो अथॉरिटेरियनिज्म is a threat to democracy. So we all need to have a mindset and confidence that democracy is the best available system we have. We all must unite, work together for the poor, for sick, for old people, and for climate change, and beat authoritarian system. India's model is development with democracy. China's model is development without democracy. उनका मॉडल देखने बहुत है. There are many countries that say we will take development without democracy, but we must prove, हमारा भारत महान है तो we must prove development with democracy. जो हमारे पास है वो सफलता होंगे. And by 2047, that model should prevail around the world. Thank you very much. जय भारत, जय तिब्बत, जय जगत. Thank you so much. और आपके लिए एक मंत्र हम सबके लिए, कर्म, करुणा और काम, इसको हम याद रखेंगे. And like very rightly you said, development with democracy, that should be the focus. And this is why we are all here together to strengthen democracy. That's what this platform is trying to do. इसके आगे मैं इनवाइट करना चाहूँगी, आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे अगली स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती वृंदा करार. श्रीमती वृंदा करार सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की वरिष्ठ नेता, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, और पूरे राजनीतिक जीवन का इनका बहुत ही एक बड़ा अनुभव है. जब भी कोई अहम मुद्दा होता है, जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता है जहां पर एक मजबूत आवाज चाहिए, तो वृंदा करार जी को हमने हमेशा हमेशा सुना है सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते हुए. एक बहुत ही जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट वृंदा करार जी, आपके राजनीतिक अनुभव को जानना सुनना चाहेंगे. आपके विचारों को यहाँ मौजूद सबको स्वागत है. थैंक यू. मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय वेंकैया नायडू गारू जी, हमारी प्रिय ताई सुमित्रा महाजन जी, हमारी प्रिय बहन डॉक्टर मीरा कुमार जी, मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण और इस ऐतिहासिक नेशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल के देश के कोने कोने से उपस्थित चुने हुए हमारे नुमाइंदे, जनवादी प्रणाली के प्रतीक हैं आप सब. आप सबको मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम और सलाम करती हूँ. मैं प्रथम ही विश्वनाथ कारक जी और राहुल कारक जी को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, इतना रिस्क लिया कि जिस समय हमारे पॉलिटिक्स में इतनी तीखापन आ गया है, लेकिन इन्होंने रिस्क लेकर ये तय किया, ऑल फॉर इंडिया, टुगेदर फॉर इंडिया, भारत के लिए हम सब एक हैं. ये थीम को लेकर हमारे देश के तमाम राजनीतिक दलों के चुने हुए प्रतिनिधियों को उन्होंने आमंत्रित करके मंच उपस्थित की कि हम अपनी बात कह सकते हैं कि क्या जब हम 2047 के भारत का जब हम कल्पना करते हैं, तो क्या हमारे देश में बांटने वाले कौन से वो मुद्दे हो सकते हैं जो हम कह सकते हैं कि हम एक होकर एक मजबूत और एक भारत को हम बनाने में सफल हैं. तो मैं आपको बधाई देती हूँ. राहुल जी, आपका पूरा जो कंसेप्चुअलाइजेशन है वो वाकई में बहुत ही है. इनफैक्ट आपकी इजाजत से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आइए मंच पर और लोगों को आपका स्वागत करने के लिए आप मौका दीजिए. आइए राहुल जी, ताकि सभी जो यहाँ हैं वो आपको बधाई दे सकते हैं. You've done a wonderful job, and your concept and conceptualization has been very inspiring. मैंने देखा यहाँ कल भी कि हमारे महिला MLAs
आए हैं, एमपीज आए हैं। पार्लियामेंट का बहुत सुंदर बिल्डिंग बन गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो हालात हैं हमारे महिलाओं की प्रतिनिधित्व के, एवरेज अगर हम हिंदुस्तान के लिए तो वी आर अराउंड 7% एवरेज हमारे पूरे देश में। और हमारे यहाँ जो महिलाएं आई हैं वो सब जानते हैं कि एक एक इंच के लिए उनको कितनी संघर्ष और कुर्बानी देनी पड़ती है हमारे इस पुरुष प्रधान समाज में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी मदद से 2047 के भारत में कम से कम 50% हमारी महिलाएं प्रतिनिधित्व वहाँ होंगे उस पार्लियामेंट में। मैं ये ज़रूर आशा करती हूँ आप सबकी मदद से। हमारे देश का एक परंपरा है कि पुरुष महिलाएं एक होकर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़े हैं और एक होकर हमारे संविधान का तमाम इक्वालिटी की प्रावधान एक होकर किए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने असेंबलीज में और पार्लियामेंट में विमेंस रिजर्वेशन बिल को पारित करके आप मदद करेंगे कि 2047 में एक समृद्ध और श्रेष्ठ भारत में महिलाएं भी श्रेष्ठ जगह पाएंगे, ये मैं उम्मीद करती हूँ। आज जब हम बैठे हैं, मैंने देखा नॉर्थ ईस्ट से हमारे बहुत सारे साथी आए हैं। आज उन सब की मन भारी है क्योंकि आज हमारे देश के कोना मणिपुर में एक बहुत संवेदनशील, मैं शब्द इस्तेमाल करूंगी, स्थिति बनी हुई है। जब हम 2047 की भारत का कल्पना करते, आपकी बहस में भी और कल जो जिस पैनल में मैं थी, ये भी एक मुद्दा उठा था कि हमारी मजबूती भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी है और नॉर्थ ईस्ट हमारे देश की एक ऐसा हिस्सा है जहां ये कॉन्सेप्ट जो दुनिया को हमने दिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो कॉन्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट में जिंदा है। हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी, हर ट्राइबल ग्रुप की, हर कम्युनिटी की आइडेंटिटी का एक महत्व है। लेकिन आज किसी प्रकार की उस आइडेंटिटी को अगर हम लोग एक पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का टूल बनाए, वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट किया जाता है कोई पॉलिटिकल गेन के लिए, और उस पहचान की जो अधिकार है वो बुलडोज किया जाए, तो ये एक सबक है हमारे लिए। 2047 के भारत में, ये मानती हूँ आप सबकी ये राय होगी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और नॉर्थ ईस्ट की भाइयों बहनों को मैं बधाई देती हूँ कि आप हिंदुस्तान के उस कोने में इस प्रिंसिपल की आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मणिपुर की जो आज स्थिति है वो बहुत जल्दी शांति की स्थिति वहाँ बनेगी, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है हमारा, उसको हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, हमने ये सोचा और आप लोगों ने मंथन किए 2 दिन कि वो कौन से तरीका होंगे जिसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं वी आर ऑल टुगेदर फॉर भारत। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट कड़ी? वो कड़ी कौन सी है? मेरी समझ में हमारे आजादी की संघर्ष हमें वो जवाब देता है। आजादी के संघर्ष के बाद उस आजादी के संघर्ष के वसूल सिद्धांत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रेखांकित किया, और वो कॉन्स्टिट्यूशन आज अगर हम देखें बहुत कमियां हो सकती है उसमें। मैं मानती हूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जो ऐसे बहुत धाराएं हैं जो डायरेक्टिव ही रह गए, अमल में नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक इक्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ आज, लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ कि अगर भारत टुगेदर, वी आर ऑल टुगेदर फॉर इंडिया, द वन डॉक्यूमेंट, द वन स्पिरिट, द वन बाइंडिंग फैक्टर फॉर ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन is Dr. Baba Saheb Ambedkar's Constitution. और उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो अलग खंभे हैं,
आज मैं इतना समय नहीं है कि हम उसकी डिटेल में जाए, लेकिन मैं 4 बात कहूंगी। सेक्युलरिज्म का मतलब इस शब्द में है, हम भारत के लोग, हमारे संविधान का प्रियम्बल कहता है हम भारत के लोग, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, हम सब भारत के लोग हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हम भारत के लोग, नॉट हम भारत के हिंदू, हम भारत के इस धर्म या उस धर्म। तो सेक्युलरिज्म का मतलब है अगर कोई निर्दोष को धर्म के नाम पर लिंचिंग होता है, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये कोई कम्युनिटी का लिंचिंग नहीं है। अगर संविधान हमें बांधता है, मैं कहती हूँ वो हर लिंचिंग संविधान का सिंबॉलिक लिंचिंग है। ये भावना को लेकर अगर हम चलेंगे, 2047 का भारत एक ऐसे भारत होगा जो कभी किसी के सामने। दूसरी बात है जनवाद की। हमारे